we are very quickly starting with today's hands-on exercise that is on the inferential statistics. So now, since you all already know the basics of inferential statistics, so today's lecture would be broadly divided into two sections. Firstly, we are starting with the parametric testing, and that will be followed by the non-parametric tests. I would be showing this to all of you, how to do these tests on SPSS. So what I request and what I expect from all of you is that please open the data set that has been shared with all of you. This is a medical data set of, say, I think 100 individuals, and we have the age, then their gender, a very quick introduction of the data, then the height, weight, cholesterol level, blood sugar level, then we have their smoking behavior, whether they smoke or not, then what is the exercise frequency, both smoking and exercise frequency and chronic disease. These three variables are categorical in nature. I hope you understand the difference between a categorical and a quantitative variable. And then we have blood sugar 2, that is blood sugar level after an interval. So just in the lecture before mine, Dr. Amit Mishra was discussing paired t-test with all of you. So this blood sugar 2 variable is here for this purpose only. We will be using this variable to demonstrate paired testing with all of you. So blood sugar 2 means that after a certain time, maybe after a month or so, we have again taken the blood sugar level. I hope the basic structure of the data is very clear to all of you. Please feel free to ask any questions that you have during the lecture. It will be easier for you to do it and understand. Okay, so just raise your hand if in case you have any question at any step. So the structure of the data is now clear to all of you. Going ahead with this, do you all know the basic difference between descriptive statistics and inferential statistics? Both of it has been taught to you, the basics. Can anybody just very quickly let me know what is the difference? It would be good if you people raise your hand and answer. Let us keep this as an interactive session. Yes, please. What is the difference between descriptive statistics and inferential statistics? You can sit and answer. Right. Very good. Okay. Great. Sit. Anybody else who wants to answer this question? Yes. Yes, very nice. So basically what you done in SPSS yesterday was descriptive statistics. That is, you were trying to describe the data. Now what happens is, I'll give you a very easy example so that you understand the difference between descriptive and inferential statistics. Now you all must have some time or the other visited a doctor, or maybe for yourself or for your family member or anybody else. Huh? Whenever nowadays we go and visit a doctor, what is the first thing that a doctor does? Suppose हमको बुखार हो रहा है, we are having a viral fever, and we go and visit a doctor. We are having a fever for say 5-6 days. We go and visit the doctor. What is first thing that a doctor does? Test. Very good. Yes. Either they will prescribe for an X-ray or some test or some diagnostic. That is the thing that every doctor does. क्यों टेस्ट लिखते हैं वो? Why do they prescribe these tests? They do it because they want to properly diagnose that whether you should be given a medicine for just a viral fever, or maybe it is a viral fever because of some other infection. That could be malaria, typhoid, any other infection. This is the fundamental and basic difference between descriptive statistics and inferential statistics. When we perform descriptive statistics, that is when we describe our data. So descriptive statistics is basically that diagnostic testing or those tests which when we go to a doctor, they prescribe. Now what happens is, when we perform descriptive statistics, we understand the nature of the data. Whether it is normally distributed or not, whether there are outliers or not, whether it is skewed or not, right?
After you have understood the structure of the data, then you decide that whether you should apply parametric test or you should apply non-parametric, or to keep it another way, I can say that whether you should be given a medicine of typhoid or whether you should be given a medicine of malaria or any other disease for that matter. So descriptive is as important as any of those diagnostic testing because it gives you basic idea of in which track you need to move ahead. We are in the statistics department and sir is sitting here. Sir would agree that many times we come across various students, research scholars, teachers from different departments of university and of elsewhere. They come to us and they say that please apply t-test to our data. It's not just that you should know how to do t-test and you do it on the data. It is important to actually understand whether t-test should be applied to your data or not, whether your data is worth applying t-test or not. So the objective of these kind of workshops, the objective of these lectures are to let you know whether you, first of all, to basically let you know what are the assumptions, why we need to decide, why it is important for us to decide that whether these tests should be applied or not. That is the first and the foremost thing. You need to be very well aware of the assumptions and why you have to apply that test, if at all it has to be applied. After you have applied the test, then the second thing is how to interpret the results. These are the two very important things. Because kaise lagna hai t-test, there are so many videos available now, so many tutorials. It just takes 5 minutes for anybody to look into those tutorials and to understand how to apply t-test using a software. So it is important to first of all know whether it should be applied or not by assumptions and all, and then what is the interpretation after it is applied. So first we begin with the parametric test. As sir said in the previous lecture, they are definitely the more powerful tests as compared to non-parametric, but they are not very widely, I would say, applied. The reason is in real life, we don't get data sets that are normally distributed. Real data, when we work on them, it is very rare that we get data sets that are normally distributed. Now, sometimes students like you, they come to us and they say that, Madam, इसमें t-test नहीं लग रहा है, so this means that research won't be published in a good research journal. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. t-test नहीं लग रहा है और तो भी आप उसमें पैरामेट्रिक टेस्ट लगा रहे हैं डिस्पाइट ऑफ assumption violation, that is wrong. Irrespective of the fact that whether it is fulfilling the assumption or not, whether it is adhering to the assumptions, you have to properly check it and then you have to apply the appropriate statistical procedure. So parametric are more powerful, and the reason why they are more powerful is because they stick to strict assumptions. Those assumptions are not there in case of non-parametric. Generally ऐसा होता है ना, I would give you an example. I would explain this to you with the help of an example. Those students or like those children who are born and brought up in a very controlled environment. By controlled environment, I mean those who are born and brought up in a very disciplined environment. Time pe sona, time pe uthna, then they are given proper food, then they do exercise regularly. Those who are born and brought up in a controlled environment, they happen to be what? They happen to be good individuals. They happen to be more successful. Generally, ऐसा होता है. And those who are left free, those who are not in a very controlled setting, they generally happen to be not very successful. मतलब मैं इसको ऐसे नहीं बोल रही हूँ. आप आराम से मस्ती मस्ती करके भी अच्छा कर सकते हैं. I am saying this in a very straight way that those who are born and brought up in a very controlled environment, they turn out to be more successful, more focused, more disciplined as compared to those who are left free. Generally, this happens. This is what is the difference between parametric and non-parametric. Since parametric tests are under a lot of assumptions, they happen to be more powerful, they happen to be more generalizable, but on the other hand, non-parametric are widely found. So, बिगड़े हुए बच्चे
Now you can complete the sentence. So coming to the parametric test, and the first parametric test that we'll discuss today, that is one sample t-test. So I would be showing you the path, that is how you have to do it on SPSS. What you can do is either you can take the screenshot or you can click the photograph of this, or it is very good if you write down these paths, because in SPSS, especially those of you who are doing this for the very first time, it is important to keep writing down the path. This is a menu driven software, not a programming language or a command based software. So it is important that you remember the path very clearly. So if in case you are, it's good that you are doing it, but simultaneously it would be very good if you keep writing down these, so that later on when you practice, you can easily come back. So the first is one sample t-test. Now before we apply parametric test, what is the basic assumption for any parametric test that sir has told you all? Can anybody come up with that? Yes. We have to check that whether the variable is normally distributed or not. सर ने एक और चीज बोली थी इसके पहले वाले लेक्चर में, if you remember, that the variable should be continuous in nature. Very good. इस डेटा में what are the variables that are continuous? बोलिए. Blood sugar level, cholesterol level, weight and height. And blood sugar too, of course. लेकिन अभी हम उस पे नहीं जा रहे. So these four variables, height, weight, cholesterol and blood sugar level, they are continuously distributed, right? Now what is the first thing that we have to do? हमको ये देखना होगा that whether these four variables are normally distributed or not. आपको ये कल बताया जा चुका है. So who is going to tell me that how we are going to check the normality? किसी भी पैरामेट्रिक टेस्ट को लगाने से पहले का स्टेप सबसे पहला ये होता है उस वेरिएबल की नॉर्मैलिटी चेक करना. कैसे चेक करेंगे नॉर्मैलिटी? एक्सप्लोर. ओके. कैसे? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सप्लोर. Now in the dependent list, we will put all those variables for which we have to check the normality. So height, weight, cholesterol and blood sugar. All these four variables you can put in the dependent list. एक का भी चेक कर सकते हैं, सारे का चेक कर सकते हैं. It's good that you put all of them together at once. Then go to plot and then click on normality plots with test. I hope you all have done this yesterday, so you all are able to do it today also. In the plot section, click on normality plots with test. Then click on continue and OK. So here you have the outputs with you. Now who is going to tell me that which variables are normally distributed and which of them are not normally distributed? Height, weight, cholesterol and blood sugar level. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा आप सबसे, that we have two tests of normality here, Kolmogorov-Smirnov and Shapiro-Wilk. Which of the two tests are we going to? Which of the two tests we will see here? KS या Shapiro-Wilk? कौन सा वाला देखेंगे? KS. Reason? Yes. Since the number of observations are large, we'll go for Kolmogorov-Smirnov. Both of them are non-parametric tests. Both of them are tests to check whether your data is normally distributed or not. दोनों की ही null hypothesis है that data is normally distributed. It is important for you to remember the null hypothesis for every test that you do. So here the null hypothesis is that data is normally distributed. So what happens here? Can anybody tell me which of the variables are normally distributed
and which of them are not normally distributed? I don't think it's a difficult question. Okay, let us start with the first one, height. What is the SIG value? You all know you all understand what is SIG value? It is the p value, it is the value in support, it is the probability value in support of the null hypothesis. Larger the value, more evidence we have in support of null hypothesis. Lesser the value, lesser evidence we have in support of null hypothesis. So here, what is the p value or SIG value for height? Less than 0.001. This means it is highly significant. This means that we will accept the null hypothesis or reject. I mean, accept is a wrong word. Either we reject or do not reject. SIG, that is the p value. किसी भी टेस्ट में इतना तो आप क्लियर हो जाएगा that you have to see the p value or the significance value to decide that whether we have to reject the null hypothesis or accept. देखिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं. पहली, what is your null and alternate hypothesis? That it should be in your mind, completely set. First, what is your null and alternate hypothesis? Second, what is the decision that you will make after seeing the SIG or the p value? And that decision is uniform for all the tests. Suppose if you are testing at 5% level of significance. Alpha बताया है sir ने. Type 1 error की probability, that is the level of significance, you all know in the previous lecture. If we take it as 5%, जो कि generally literature में लिया जाता है, 1% भी लिया जाता है, but उससे और strict और अच्छा हो जाता है, but on a threshold is generally taken to be 5%. If it is less than 5%, या फिर if it is less than 0.05, we reject the null hypothesis. ये रट जाना चाहिए आपको बिल्कुल. अभी इस क्लास के बाद it should be complete set on your mind. कोई कभी रास्ते चलते हुए बोल देगा p value इतनी है, you know what are you going to do with your null and alternative. So if it is less than 0.0, I'm talking about 5% level. If we go into 1% level, it will be less than or more 0.01. Okay, coming back, it is less than 0.05, you reject your null hypothesis. If it is greater than 0.05, we will accept our null hypothesis, or we don't have a strong evidence against our null hypothesis. Here, what is it? Less than 0.05 or more than 0.05? For height, obviously less than 0.6. It's in fact less than 0.01 also. तो हम क्या करेंगे इसे? What will we do with the null hypothesis? How many of you are saying reject? Raise your hand. Okay, one. What about others? You feel we are going to accept it? So, matlab, abhi bhi you are not clear with the basic concept of what is p value and what is SIG. As I said, significance value or p value is a probability in support of null hypothesis. ठीक, इसको इस तरीके से समझिए. Now, what is the range of probability? कहाँ से कहाँ तक लाई करता है? 0 to 1. जितना ये 1 के पास होगा, उतना हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहा है, और जितना 0 के पास होगा, उतना हम बोलेंगे कि नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस. और कोई कट ऑफ तो लगाया जाएगा ना. ऐसे तो नहीं कह सकते कि भाई कितना सपोर्ट कर रहा है, कितना सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो वो कट ऑफ हमने लगा दिया 0.05 पर, since it is 5% level of significance. So again, I am putting it in this way. If the value is less than 0.05, means it is not supporting the null hypothesis, so reject the null hypothesis. And if the value is greater than 0.05, means it is on the higher side. So there is a stronger evidence, a stronger support to the null hypothesis. That means we are accepting the null hypothesis. So in this case, since the value is very less, so we
reject the null hypothesis. We do not have solid evidence to support the null hypothesis, and that is why we reject H naught and we conclude that data is not normally distributed. Is this clear to all of you? The null hypothesis here was that data is normally distributed. Since it is very less, means we are not supporting the null hypothesis, and we conclude that data is not normally distributed. तो पहली चीज हमने क्या निकाली? Height is not normally distributed. Come to the weight now. What about weight? Weight is normal है कि non-normal है? What is the p-value for weight? 0.018, which is less than 0.05. तो क्या करेंगे null hypothesis को? Reject. और क्या conclude करेंगे? That weight is also not normally distributed. Is it clear to everybody? If anybody has any doubt here, please raise your hand because this is very important. Okay, what about cholesterol level then? What is the p-value for cholesterol? 0.200. So this is greater than 0.05 or less than 0.05. If it is greater than 0.05, then we will accept the null hypothesis or reject it. And what will we conclude? Very good. Cholesterol level is normally distributed. वो bottle इधर दे दो मुझे पानी. That cholesterol level is normally distributed. Blood sugar, since it is greater than 0.05, again we will accept the null hypothesis and conclude that blood sugar level is also normally distributed. Is this clear to everybody? Any doubts, anyone? So two variables here are normally distributed and two variables here are non-normally distributed. तो हमें जो पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने होंगे वो किन में लगाएंगे हम? Cholesterol and blood sugar level. And non-parametric tests we will be applying on height and weight. This is the first thing that you do when we start with parametric testing. So let us now go to the data after we have checked the normality and start with one sample t-test. Which variable are we going to use here for one sample t-test? Let us check for blood sugar or cholesterol normally distributed है. So let us check for cholesterol level. ठीक है? How are we going to apply one sample t-test? Analyze, compare means and one sample t-test. You all can write down this part or take the screenshots for the online participants. So we go to analyze, compare mean and one sample t-test. What is one sample t-test? हमको ये देखना है that whether the population mean or the mic is not working. Whether the population mean is equal to a hypothetical mean. On the basis of this sample, we have to test that whether the mean is equal to the hypothetical mean. One sample mean. To analyze, compare mean and one sample. In case of test variable, हम क्या रखेंगे? Cholesterol level. One accident. It's one sample की test, एक variable के लिए at the time check.
नीचे यहाँ पर एक सेक्शन आ रहा है, you could see on your system, test values. Now, what this test value actually means? Whether the value is equal to a hypothetical value. Now, how do we decide on this hypothetical value? Any idea how do we decide on this hypothetical value? One sample t-test or one sample testing means that you have one sample and on the basis of that one sample हमको देखना है that whether the average, मतलब इसकी अगर null hypothesis बनेगी तो ये बनेगी that whether average cholesterol level is equal to 300 or not. Just example, how did I decide on this 300? अभी सर जब आपको थ्योरी पढ़ा रहे होंगे इसके पहले वाले लेक्चर में तो उन्होंने इसका नल हाइपोथेसिस लिखा होगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट. हाँ, this mu is your population mean. On the basis of the sample, this sample, we have to draw certain inference on the population parameter. और हम क्या करेंगे that whether the on the basis of this sample, whether population mean is equal to 300 or not. How did we decide on this value of 300? Any idea? आप लोग, you people are going to do this testing in future also. You people must have made a questionnaire as well. लगाएंगे टी टेस्ट तो कैसे डिसाइड करेंगे इस हाइपोथेटिकल वैल्यू के लिए? अभी डिस्कस हो रहा था इन द लेक्चर बिफोर दिस वन आल्सो. फर्स्ट वी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, पास्ट लिटरेचर, डिस्कशंस विद द एक्सपर्ट्स. इन्हीं सबसे तो पता लगता है व्हाट कुड बी द हाइपोथेटिकल वैल्यू. पुराने लिटरेचर सर्च करके कि अच्छा हमको पता लग रहा है दैट अडल्ट पॉपुलेशन में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मली लाइज बिटवीन 300 to 350 to 250. इन्हीं सब के आधार पे तो हाइपोथेटिकल वैल्यू डिसाइड करते हैं. So let us put the test value here as 300. Has everybody done it? Yes. हो सकता है मुझे 300 लग रहा हो, आपको 200 लग सकता है, किसी को 250 लग सकता है. Maybe for the Indian adult population, we are feeling that 300 could be the average level. You reside somewhere in the hills and you feel that there people have lower cholesterol level, so you could take an average cholesterol as 200. So it completely depends on your choice. Yes. तो चॉइस भी ऐसे नहीं बनती ना. चॉइस कैसे बनती है? यू आइदर डिस्कस इट विथ योर प्रोफेसर्स, discuss it with senior people who have been doing research in this area, or if no research, nothing has been done, then purely by your own exploration, by your own thinking. कई बार ऐसा होता है ना that एकदम novel चीज you are starting up where you are not finding anything existing, so then purely on your choice you can go up and take hypothesized value. It's an imagination, a hypothetical. Yes, it's now what happens is in t-test or in any parametric test, we work on mean. चाहे वो independent t-test हो, चाहे वो paired t-test हो, और चाहे वो one sample t-test हो. We only work on mean. तो हम कैसे करते हैं? Whether average height is equal to a hypothetical height, that is one sample. Whether average height for male is equal to average height of female, that is two independent samples. Whether the average blood sugar level today and average blood sugar level after a month of medicine or exercise, that is a paired. We only work on mean or average. Any other questions till now? Right. So we've put a hypothetical value, we've put a test value. Now, अब यहाँ पर एक options आ रहा होगा. Now here there is this section of confidence interval. If you want to now when we get a statistic, एक statistic आती है यहाँ पे. Whenever we get that statistic or the value, उसके साथ we also get confidence interval. 95% confidence means that if 100 times you're going to take the sample, at least 95 times you will get the value in this range. 99 में तो 99 times. तो ये आप change कर सकते हैं. Safer side we going for a 95% confidence only. तो इसमें कुछ भी आपको change नहीं करना है. We'll go with the default settings here. ठीक? Now click on continue and here click on OK. Has everybody been able to do
Has everybody been able to do one sample t-test? Now we have a first table here that shows mean, standard deviation, standard error. This is the basic descriptive statistics. ये हम वहां से भी निकाल सकते हैं जो हम फ्रीक्वेंसी या हो सकता है कईयों के लैपटॉप में ये लास्ट वाली टेबल नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही है ना, हम उसको बताएंगे भी नहीं, उसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। ये थोड़ा एक्सेप्शनली एडवांस वर्जन है सॉफ्टवेयर का, तो इसलिए आप इसको प्लीज इस पे ज्यादा ध्यान ना दें, इसको इग्नोर करने की कोशिश करें। पहली और दूसरी टेबल हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम उसी को पढ़ेंगे, ठीक। तो अभी हम पहली टेबल पर आते हैं। इट टेल्स यू मीन, standard deviation and a standard error. Are these three descriptive statistics measures clear to all of you? कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा हो? मीन, एसडी, स्टैंडर्ड एरर आ रहा है सबको? देखिए हाँ ना नहीं करेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। आ रहा है? अब आते हैं सेकेंड वाली टेबल पे। नाउ दिस इज योर वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पर what is the first thing that it is giving you? SIG or the significance value, that is the p value। कितनी आ रही है यहाँ पर? 0.00, it is less than 0.01। This means that it is highly significant. What will we do? Accept or reject the null hypothesis? Reject the null hypothesis, very good। Rejecting the null hypothesis means that the average cholesterol level is not equal to 300। There is a significant, इसको लिखेंगे कैसे? There is a significant difference between average cholesterol level and मतलब the average cholesterol level is not equal to 300। जो आपने hypothetical value ली, there is a difference between the population average cholesterol level and 300। So what you will say that the cholesterol level, the average cholesterol level is not equal to 300। You reject the null hypothesis। ये अगर हम accept करते हैं तो हम कहते हैं that the average cholesterol level is equal to 300। अगर ये value greater than 0.05 है, less है, reject कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं there is a significant difference between the hypothetical value and the average cholesterol level for the population। Is this clear to all of you? We reject the null hypothesis। If one sample t-test is clear, we go into the next। बढ़े आगे? Okay। The second one is independent t-test। Yes। So there's a question from her and she's saying what is this t value? जब हम calculate करते हैं तो we calculate a t statistic। This is your t statistic जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया था x bar minus mu upon sigma upon under root, ये फॉर्मूला है। This is how we calculate the calculated t जो कि फॉर्मूले से निकलता है। और वो ये कि जैसे कि हम अब तक हमने भी एक पेपर लिखा था और उसमें ये टी टेस्ट, वैसे तो ऐसी वन सैंपल टी टेस्ट नहीं लगा था बट टी टेस्ट, तो हम उसमें स्टैटिस्टिक द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द सैंपल और हम सिग्निफिकेंस 0.5 पर जो वैल्यू आती है टेबल वैल्यू हम उससे कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली हम जो 0 पॉइंट आप बार बार कह रही हैं कि 0.05 से कम या ज्यादा हो तो हम उसकी टेबल वैल्यू में देखते हैं कि That is a different concept which you are saying। ओके That is tabulated and calculated। Normally now what happens is when you manually do this, मतलब जब हमने ये सब t-test पढ़ा है, and I think if we have people from education or psychology or sociology, they must have studied t-test, proper theory पढ़ा होगा आपने। yes, In theory what happens is that you are being given the formula। That formula gives you the calculated value। We compare that calculated value with tabulated value। जो सी की standard table होती है with a certain degree of freedom at a level of significance,
हम उसकी टैबुलेटेड वैल्यू से कैलकुलेटेड कंपेयर करते हैं. हियर वी आर डूइंग डिफरेंट. हियर वी आर उसी जो टैबुलेटेड और कैलकुलेटेड से हम एक p वैल्यू कैलकुलेट कर ले रहे हैं, मतलब निकाल ले रहे हैं. Okay. Which is called SIG. And we are simply, so now what happens, these softwares, any software now if you see, they don't give you the tabulated value. So that is why that concept is now limited to theory. In practical, what we do, they simply give you this SIG, significance or p value. So we just focus on 0.05 Yes. value Yes. and compare with this. Yes. If your level of significance is 5%. If it is 1% or maybe 0.1%, jitna bhi le rahe ho 10%, then we compare it with that. So now the concept of calculated and tabulated has basically been limited to the theory. All softwares, all statistical procedures, they now only give you the significance or the p. That is why this concept is now in range. Everybody only talks about SIG or the p value, but ये आता वहीं से है. From that calculated tabulated value से ही ये निकल कर गया. हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, मैंने कहा पूछ लेनी थी. अभी क्लियर हो गया? Yes. Sure. Thank you. Right. Any other questions from anybody? Okay. So coming to the next test, that is independent t-test. अब independent t-test अगर हमको इस डेटा पे लगाना होगा, can anybody give me an example of how can we apply independent t-test in this data? बताइए. कोलेस्ट्रॉल लेवल पर ही स्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जहां पर अगर हमको सैंपल या इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाना है तो कैसे लगाएंगे? सपोज आई हैव टू सी दैट वेदर द एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर दोज हु स्मोक is equal to the average cholesterol level for those who do not smoke. कर सकते हैं सब. It is an independent t-test. इंडिपेंडेंट टी-टेस्ट या टू सैंपल टी-टेस्ट लगाने से पहले assumption ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों ग्रुप्स में वेरिएबल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए. दोनों ग्रुप्स में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब समझ रहे हैं? फॉर स्मोकर एज वेल एज नॉन स्मोकर, कोलेस्ट्रॉल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. हाउ आर वी गोइंग टू चेक दैट? स्प्लिट. एक और तरीका भी होता है स्प्लिट के अलावा. दैट्स एन इजियर वे. बताऊं? एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर. यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल को रखिए बस, बाकी हटा दीजिए बिकॉज वी डोंट नीड द रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स. जस्ट पुट कोलेस्ट्रॉल हियर इन द डिपेंडेंट. इन द फैक्टर लिस्ट पुट स्मोकिंग बिहेवियर. This factor basically is used only for categorical variables. ये समझ में आ रहा है सबको? फैक्टर लिस्ट में put smoking behavior and in the dependent list put cholesterol level. Has everybody done that? Now in the plots already we have selected normality plots with test. So we don't have to do anything here. Now click on OK. Cholesterol level, factor list में put smoking behavior and click on OK. Now if you see the test of normality, we are getting the SIG differently for a smoker and non-smoker. Is there anybody जिसका नहीं आ रहा है? Should I repeat it या फिर हो गया सबका? एक बार repeat कर दूं. Go to analyze, go to descriptive statistics,
देन गो टू एक्सप्लोर। डिपेंडेंट लिस्ट में तो कोलेस्ट्रॉल रहेगा, फैक्टर लिस्ट में स्मोकिंग बिहेवियर। In the plot section, it will be normality plots with test जो already selected था, and then click OK. Has everybody got this table? Yes? Okay. So now we have independently, we know that whether cholesterol level की normality स्मोकर के लिए और नॉन स्मोकर के लिए, तो दोनों के लिए ही क्या आ रही है पी वैल्यू greater than 0.05, very much supporting your null hypothesis, which means that we accept the null hypothesis and we conclude that data is normally distributed. So do not reject the null hypothesis and we conclude that. So cholesterol level for a smoker as well as non-smoker is normally distributed. अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि सपोज दो में से किसी एक के लिए नॉर्मल आ रहा है और दूसरे के लिए नॉन नॉर्मल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? We will not go for parametric. Yes, it should be normally distributed for each of the two groups. Only then you will go for normal. That is independent t-test. Should I proceed with the independent t-test if this is clear to everybody? Yes? Wait for a minute. Okay, I will. It should be normally distributed for both the groups. It's good that you all are writing. I think मेरे अपने खुद के बने हुए SPSS के notes मुझे 2011 में पढ़ाया गया था ये. And I still have those notes with me and I still teach using those notes. I still take those notes as a reference. It's more than 10 years now, 13 years हो गए, but I still have that diary with me and I had written that down very clearly, ऐसे करके पूरा बनाया था. So it's a very good habit that you all make proper notes because it is handy and it goes with you forever. It's a good habit of writing down. बढ़े आगे, madam? Okay. So it's normally distributed for both the groups, smoker and non-smoker. And so we go ahead and check the whether. तो अब हमारी independent t-test के लिए what would be the null hypothesis? अगर आपको याद हो सर ने जो इसके previous lecture में कराया था, mu1 equal to mu2 ऐसे करके लिखते हैं. mu1 equal to mu2 का मतलब है whether the average cholesterol level for a smoker is equal to the average cholesterol level for non-smoker. और keeping it in other words, हमारी null hypothesis होगी mean cholesterol level for a smoker is equal to the mean cholesterol level for non-smoker. So what is the path to apply independent t-test? Analyze, compare means, and independent t-test. Wonderful. What CSS is this? Analyze, compare means, and independent sample t-test. In the test variable, write cholesterol level. Test variable puts cholesterol. We have put smoking behavior in the grouping variable. You must have seen question mark, everybody. दिख रहा है? जब तक ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, you will not be able to click on OK. OK किसी के में भी highlighted नहीं आ रहा होगा. अब हमें क्या करना होगा? We will have to define the groups. ये इसलिए बना हुआ है. I would tell you. Suppose if your variable has say 3-4 categories. But since it is a t-test, it has to be applied only on 2 categories. So here it is important for you to let the system know that किन categories में हमको compare करना. तो यहाँ पर आप वो वाले कोड डालेंगे जिन कोड से आपका ये डेटा कोडेड है.
तो स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग में क्या कोड लिया गया है? 01। कैसे देखते हैं कोड, ये पता है? अच्छा, वेरिएबल व्यू के अलावा एक और भी कोई स्मार्ट तरीका भी होता है? हैव यू सीन दिस ऑप्शन ओवर हियर, वैल्यू लेबल्स? क्लिक ऑन दिस, you get to know the codes. Again click on this, you get to know the labels. It is the fourth from the right, the fourth button from the right side. आप लोग स्क्रीन पे देख लो, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा कर्सर जहां पे है, दैट इज वैल्यू लेबल्स. In the toolbar above, the fourth button from the right is your value label. इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमें तुरंत पता चल जाता है that what is the code behind. It is very important to put value labels. I hope you all have studied this in the yesterday's class. It is extremely important to put label to your category data. क्यों? क्योंकि मुझे पता है जीरो क्या है और वन क्या है. Suppose if I see this data after a month, कोई भी पीएचडी कितने दिन में होती है? 5 साल तो ज्यादा हो गया. अभी ये रो देंगे सब जो बैठे हैं यहाँ. 3 साढ़े 3 साल में तो होती है ना. At least it takes 3 to 3.5 years. Suppose you see your data today and then you see your data after say 6 months, then you see your data again after some time, और फिर हम भूल जाते हैं कि कोड्स क्या होते हैं 0 1 2 3. So then it is extremely important for you to put value labels so that you know what is the code behind a certain value. What is the label behind the value? It is a comprehensive way of creating a data, a complete data. ताकि आपके बाद कोई और भी उस डेटा को कभी यूज करे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में डेटा अवेलेबल रहे. Okay, so now we know what is 0 and what is 1. Coming back to independent t-test, analyze, compare means, independent sample t-test. टेस्ट वेरिएबल में क्या डालेंगे? कोलेस्ट्रॉल लेवल. ग्रुपिंग में क्या डालेंगे? स्मोकिंग बिहेवियर. एंड हियर इन द डिफाइंड ग्रुप्स, yes, in group 1 put 0 and in group 2 put 1. Everybody वही कोड डालेंगे जो कोड आपके डेटा में दिया गया है. आप 1 2 करेंगे तो वो 1 भी तो कर देगा, 2 तो कुछ है ही नहीं ना. तो वो कोड यहाँ पे डालेंगे जो कोड आपके डेटा में दिया गया है. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी. सो 0 1 आपने कर दिया, यहाँ पे आपने किया कंटिन्यू. प्लीज अनचेक दिस ऑप्शन ऑफ एस्टिमेट इफेक्ट साइज, क्योंकि ये चीजें हम अभी नहीं कर रहे हैं. जिसके में आ ही नहीं रहा है वो तो बहुत ही खुशी की बात है. जिसके में गलती से ये आ रहा होगा उसको प्लीज आप अनचेक कर दें. इट विल अननेसेसरी क्रिएट कंफ्यूजन. दिस इज विद द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसपीएसएस और हम लोग उस पर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, तो इसलिए आप उस पर ध्यान ना दें तो बेहतर होगा. यहाँ पर जो ऑप्शन वाला बटन आ रहा है उसमें सेम चीज है जो वन सैंपल टीचर्स में आ रहा था. तो यहाँ पर भी आप 95% डाल सकते हैं, 99% कर सकते हैं. कंटिन्यू करिए और उसी कर दीजिए. Should I run this, everybody? Yes. How many of you are sleeping after having a good snacks or high tea, whatever? How many of you are sleeping? Okay. So पहली वाली टेबल हमें बता रही है what is the mean and what is the standard deviation. ये जनरली जो पहली टेबल सभी टेस्ट में होती है, it is your descriptive statistic, and the reason why it comes here is that कोई भी रिसर्च पेपर आप लोगों ने देखा होगा या किया होगा तो उसमें पहली टेबल हमेशा क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ही होती है ना. सो आइदर वी डू इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव और वी डू इट फ्रॉम हियर. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट. तो पहली टेबल वो हो. अब आइए सेकेंड टेबल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिपेंडेंट टेबल्स. नाउ दिस टेबल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. जो पहला वाला सेक्शन है इसका, दैट इज लेवनीज टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस. मतलब पहले वाले सेक्शन से मेरा मतलब है दीज 2 पार्ट्स जिसमें एफ लिख के आ रहा है और एसआईजी लिख के आ रहा है.
ठीक है, अभी आई एक्सप्लेन बोथ. फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर. This entire table is divided into two sections. First is your equality of variance, and then we have equality of mean, जो हमारा objective है. So coming to equality of variance first. जब आपने अभी इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पढ़ा होगा सबने, तो उसका एक assumption सर ने बताया होगा that variance should be equal for both the groups. जैसे नॉर्मेलिटी हमने टेस्ट किया कि वेरिएबल शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द ग्रुप्स, वैसे assumption यहाँ होता है दैट वेरिएंसेस शुड बी इक्वल इन बोथ द ग्रुप्स, जिसको बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. ये टेस्ट कैसे किया जाता है? ये टेस्ट किया जाता है बाय अप्लाइंग लेवनीज टेस्ट फॉर होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. क्योंकि ये वेरिएंस का टेस्ट है, इसलिए यहां पर एफ टेस्ट लगता है. ठीक है, अब इसकी पी वैल्यू क्या आई? 0.707. नाउ व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस फॉर? सो बेसिकली व्हाट दिस मींस इज, हम टी टेस्ट लगाने से पहले उस अजम्पशन चेक करते हैं दैट वेदर वेरिएंस इक्वल है या नहीं, उसके बाद हम टी टेस्ट पर आएंगे. तो अभी यहाँ पे वेरिएंस इक्वल में व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? दैट वेरिएंसेस आर इक्वल फॉर द टू ग्रुप्स. टी टेस्ट की नल हाइपोथेसिस क्या है? इंडिपेंडेंट, μ1 इक्वल टू μ2. दिस इज क्लियर. वेरिएंस वाले के लिए नल हाइपोथेसिस होती है सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर मतलब समझते हैं ना, वेरिएंस. तो सिग्मा 1 स्क्वायर मींस पहले ग्रुप का वेरिएंस एंड सिग्मा 2 स्क्वायर मींस दूसरे ग्रुप का वेरिएंस. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? तो अब यहाँ पे व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस? 0.707. It is greater than 0.05. What does this mean? Null hypothesis. Very good. I can see the louder face now, which is a good thing. So null hypothesis is accepted, which means that variances are equal. अगर variance equal है, तो हम इस टेबल की पहली रो देखेंगे. अगर variance unequal है, तो हम इसी टेबल की सेकंड रो देखेंगे. If variance is equal, see where my mouse is. Do we have a pointer by any chance? If variances are equal, we see the first row, this one. And thank you. And if variances are unequal, this equal variance assumed. In the second section of the table, we see the first row if variances are equal. If variances are unequal, then we see this, a second row of the table. In this particular, for this particular data, there is not much difference in the SIG. अगर आप दोनों की अब पहला वाला काम तो क्लियर हो गया हमारा. फर्स्ट सेक्शन इज सॉल्व, वी नो वेरिएंस इज इक्वल, वो क्लियर हो गया. पहली रो पे आएंगे. नाउ वी हैव टू चेक फॉर द टी टेस्ट, राइट, दैट वेदर द एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल फॉर स्मोकर एंड नॉन स्मोकर इज द सेम और नॉट. पहली रो देखेंगे. ऊपर वाली रो पे अगर आप देखोगे, कम टू दिस SIG, क्योंकि टी टेस्ट की SIG तो यही है, दिस वन. हाँ, what is this? 0.408, greater than 0.05, accept the null hypothesis, and we conclude that there is no significant difference in the average cholesterol level for smoker as well as non. Statistically significant difference नहीं. वैसे तो मीन में अंतर आ रहा है. स्मोकर में कोलेस्ट्रॉल लेवल इज स्लाइटली रेज्ड अगर आप ऊपर देखते हैं, but the difference is not statistically significant. मतलब 5% level of significance पे the difference is not so clear. Is independent t test clear to all of you? तो यहाँ आप देख रहे होगे दोनों की p values में बहुत विशेष अंतर नहीं है, नहीं होता है, but there is a change in the formula. If you see the degrees of freedom are different, so there is a change in the formula of how we do it for
equal variance assumed and how we do it for equal variance not assumed. यही अगर हमारी एफ टेस्ट वाली, अगर ये वाली हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट हुई होती, if this would have been less than 0.05, then we would have seen this p value 0.405. Is independent t-test clear to everybody? Should I go ahead with pair t-test? Okay. Now, in this data for pair t-test, we have only blood sugar level. We have blood sugar level, the first variable, and we have blood sugar too. So we have taken blood sugar after a month. मतलब एक repeated time interval के बाद फिर से we have taken blood sugar level. ठीक. Now for paired t-test, I think when to apply independent and when to apply paired is clear to everybody. When you have two independent groups, we apply independent. When we have same set of individuals and we have repeated observations on same set of individuals, then we go in for pair. ये बहुत important है समझना that I think somebody is joined online. Please mute. There will be some confusion. ये बहुत important है समझना. In independent t-test, we can have different number of samples for two groups. मतलब मेल का नंबर अलग हो सकता है, फीमेल का नंबर अलग हो सकता है. That's not an issue. But for paired, always remember, since it is same set of individuals, तो इसलिए दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल, सेम नंबर होना चाहिए. ठीक. Now, what is the assumption when we apply paired t-test? That it should be normally distributed. What should be normally distributed? The difference should be normally distributed. Actually, दोनों independently भी normally check कर सकते, क्योंकि अगर दोनों normal होंगे तो उनका difference automatically normally distributed होगा. तो आप दोनों का independently भी अलग से भी normal distribution check कर सकते हैं, या फिर आप उनका difference calculate कर सकते हैं और उसका normally उसकी नॉर्मलिटी. क्यों मैं डिफरेंस की बात यहाँ पे कर रही हूँ? क्योंकि जो इसकी स्टेटिस्टिक बनती है, अगर देखोगे तो वो डिफ पर बनती है. मतलब उसमें डी निकाला जाता है, तो डी का ही स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाता है, तो डी माइनस 0/ST. तो क्योंकि डिफ मीन डिफरेंस, क्योंकि डिफरेंस पर उसकी टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर्म करी जाती है. दैट इज व्हाई इट इज गुड इफ यू कैलकुलेट द डिफरेंस फर्स्ट, and then you check its normality. If the difference is found to be normally distributed, then we will apply paired t-test. Difference निकालना आता है इसमें? नहीं. Compute. Okay, very nice. Analyze, नहीं. Transform, compute. Those who don't know can do it right away with me. Transform, compute. Then in the target, what are we going to write? DIFF. कुछ भी नाम आप दे सकते हैं उसको, डिफरेंस, डिफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं. तो हमने दिया DIFF. न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे हम क्या लिखेंगे? ब्लड शुगर लेवल पहला वाला माइनस ब्लड शुगर 2. मैं फिर से एक बार करके दिखा दे रही हूँ. इन द टारगेट राइट DIFF, या फिर कोई भी वेरिएबल नेम जो आप देना चाहें. यहां पर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन पे राइट ब्लड शुगर लेवल माइनस ब्लड शुगर 2. Some of you might have this question, 2 minus 1 क्यों नहीं किया, 1 minus 2 क्यों किया? It's irrespective of what you do. We just have to calculate the difference. So 2 minus 1 भी कर सकते हैं, 1 minus 2 भी कर सकते हैं. It will account for all that you do. Normality पे कोई फर्क नहीं आएगा if you do 2 minus 1 or 1 minus 2. Has everybody done this? माइनस हमने यहाँ से लिया है. अगर यहाँ से लेने का -1 नहीं है, तो आप कीबोर्ड पे भी तो माइनस का साइन होता है आपके, आप वहां से भी माइनस कर सकते हैं. That's okay. Either do it from here or you can directly do it from the keyboard. Has everybody done this? Now if you click on OK and if you see your data, तो डेटा पर एक नया वेरिएबल बन के आ गया होगा.
if करके लास्ट में आ रहा है सबके डेटा में. Is there anybody who is not able to have that variable if? It will not be in the output, it will be in your data. It will not be in the output, it will be in your data. Has everybody got this? Is there anybody जिससे में ये diff variable नहीं आ रहा हो? Should I repeat it or should I continue with the pair t-test? Continue? Okay. So now, before applying pair t-test, it is important for us to see that whether this diff is normally distributed or not. कैसे check करेंगे? Analyze. Very good. Descriptive statistics. Then explore. अभी हमने पहला वाला ये किया था, तो उस वजह से फैक्टर लिस्ट में स्मोकिंग आ रहा था, डिपेंडेंट में कोलेस्ट्रॉल आ रहा था. आप इसको रीसेट कर दीजिए और दोबारा से डिपेंडेंट में हम क्या डालेंगे अब? व्हाट विल बी पुट इन द डिपेंडेंट? डिफ. डिफ को डिपेंडेंट में डालेंगे, प्लॉट्स में जाके नॉर्मेलिटी प्लॉट विथ टेस्ट, बिकॉज वी हैव टू चेक फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ डिफ. कंटिन्यू करिए और ओके कर दीजिए. We have checked for the normality before also. You all know how to do it. Analyze, descriptive statistics, explore, in the dependent list, put if. क्योंकि रीसेट कर दिया था हमने, इसलिए पुराना सब हट गया. दैट इज वाई प्लॉट्स पे भी वो नॉर्मेलिटी प्लॉट हट गया था. क्लिक अगेन ऑन प्लॉट, क्लिक ऑन नॉर्मेलिटी प्लॉट्स विथ टेस्ट, कंटिन्यू एंड क्लिक ऑन ओके. Has everybody got the normality of this? आ गया? क्या आ रहा है? It's coming normally distributed greater than 0.05. तो यानी हम ये कह सकते हैं that blood sugar before and after is good to apply paired t-test. लगा सकते हैं paired t-test. ठीक? Should we go ahead and apply paired t-test? How to apply paired t-test? Analyze, compare means, and paired sample t-test. Analyze, compare means, and paired sample t-test. Is everybody on the same page? कहीं पर भी कोई डाउट हो आप प्लीज पूछ ले, बिकॉज दीज थिंग्स आर आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पूरे प्रोग्राम में इफ यू डोंट नो हाउ टू पुट अप्लाई पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, देन आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. हाँ, तो कहीं पे किसी स्टेप में डाउट हो, प्लीज रेज योर हैंड्स, आई विल रिपीट इट अगेन. एनालाइज, कंपेयर मीन्स एंड पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट. वेरिएबल 1 में क्या डालेंगे? ब्लड शुगर लेवल. एंड वेरिएबल 2 में यस, ब्लड शुगर 2. वो 1 वाला पहला वाला 1 ही है, तो उसको बस ऐसे ही रहने दिया है. सो वेरिएबल 1 में वी पुट ब्लड शुगर एंड वेरिएबल 2 में वी पुट ब्लड शुगर 2. एस्टिमेट इफेक्ट साइज जिसके में आ रहा होगा अनचेक कर दें. ऑप्शंस में अगेन 95% यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर एंड क्लिक ऑन ओके. Has everybody got the output of paired sample t-test? Yes? पीछे आ रहा है आउटपुट उधर. हम्म. पहली वाली टेबल है, इट इज शोइंग यू मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अगेन
नाउ व्हाट इज द सेकंड टेबल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ द सेकंड टेबल? यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? पेयर्ड टेस्टिंग। पेयर टेस्टिंग में कोरिलेशन का क्या मतलब हो सकता है? व्हाट इज कोरिलेशन? आई मीन द थ्योरी इज नॉट येट डिस्कस्ड विथ यू, बट आई थिंक बेसिक आइडिया तो होगा कोरिलेशन का सबको। हाँ, yes, very good. So correlation, as we know, is a measure of linear relationship between two variables. तो यहाँ पर पेयर टी टेस्ट जब हम लगाते हैं SPSS में, the reason why it also calculates correlation is that it kind of checks that whether the two variables are actually correlated or not. एक्चुअली पेयर्ड टी टेस्ट का एक नाम डिपेंडेंट टी टेस्ट या डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी होता है। मतलब जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट की बात करते हैं तो वो तो टू ग्रुप हो गया, लेकिन पेयर्ड की जब हम बात करते हैं तो अक्सर उसको लिटरेचर में या किताबों में ऐसा करके लिखा जाता है दैट डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। व्हाट एक्चुअली डिपेंडेंट मीन्स दैट वेदर द टू सैंपल्स आर कोरिलेटेड और नॉट। मतलब हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि ये पेयर्ड सैंपल है, बिफोर आफ्टर का सैंपल है। तो सर एग्जाम्पल भी दे रहे थे कि सपोज इस वर्कशॉप में आने से पहले आपका एक टेस्ट होता अबाउट स्टेटिस्टिक्स एंड RM एंड एवरीथिंग, फिर इसके बाद होता, तो संभावना तो यही है कि मतलब वो एक बढ़ के आता और वो एक रिलेटेड सैंपल तो है ही। और आएगा भी, आई एम क्वाइट श्योर ऑफ द फैक्ट आएगा। हाँ, सो वही चीज यहाँ है कि SPSS sort of finds out that whether actually your samples are correlated or not. यहाँ पर दो चीजें कैलकुलेट करता है वो इस टेबल में। this table, the second table I'm talking about, it has nothing to do with the interpretation of t-test. t-test की टेबल तीसरी है। ये एक तरीके से सैंपल को ये चेक करना चाह रहा है कि वो इस लायक है कि उसमें पेयर टी-टेस्ट लग सकता है या नहीं। सैंपल की मतलब whether the sample is worth applying paired t-test or not, second table वो देख रहे। So it is divided, it has three things, n, that is the number of observations obviously, then you have the correlation coefficient and then you have the SIG. तो हम यहाँ पे SIG देखेंगे। SIG का मतलब हुआ अगेन p वैल्यू, तो कोई कुछ टेस्ट कर रहा होगा ये। The null hypothesis for this test is that there is no correlation या फिर correlation coefficient is equal to 0. मतलब ये तो वन के पास है बिल्कुल। सो इट्स हाईली सपोर्टिव ऑफ द नल हाइपोथेसिस एंड वी से दैट we do not reject the null hypothesis and we conclude that it is greater than 0.05. तो मतलब there is no correlation. No correlation का मतलब क्या हुआ? Yes. So this sample is not suitable for paired t-test. Very few people know about this. इस टेबल को सीधे इग्नोर कर देते हैं, पेयर टी टेस्ट के इंटरप्रिटेशन पे आते हैं, जो वैल्यू आती है उसको रिपोर्ट कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? until unless here, I mean this is actually the adequacy of your sample. ये चेक कर रहा है how worthy is your sample to apply paired t test or not. तो इसके अनुसार अभी I should immediately stop and not go into the interpretation of paired t-test. Why? Because the two samples are not even related. You are claiming that they are related. You feel that they are related. But in the data, in the मतलब डेटा के सेंस में वो रिलेटेड नहीं लग रहा। समझ रहे हैं? बट सिंस दिस इज बेसिकली फॉर इंटरप्रिटेशन, अभी मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी पी वैल्यू लेस देन 0.05 है, तभी हम नीचे जाते हैं। बट keep this in your mind, only if the p value here comes out to be less than 0.05, then only we will claim कि दोनों correlated हैं और तभी हम आगे बढ़े। So the two samples need to be related if you have to apply paired sample t-test.
अब पेयर्ड पे आते हैं। अब सेम चीज है बिल्कुल, सब में एक ही चीज देखनी है आपको। ये सब कुछ दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, अपर लोअर टी। लेकिन हम किस चीज को देखेंगे? एसआईजी। एसआईजी कितना आ रहा है यहाँ? 0.010। इट इज लेस देन 0.05। रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट करेंगे तो क्या? What is the null hypothesis here? There is no significant difference in the average blood sugar level of 1 and 2. ब्लड शुगर 1 और 2 को कर रहे हैं, इसकी भी H0 μ1 इक्वल टू μ2 ही होती है। यानी देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर। रिजेक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे? देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल बिफोर एंड आफ्टर। डिफरेंस आ रहा। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि किसमें डिफरेंस ज्यादा है। अगर आ रहा है तो किसी में ज्यादा किसी में कम तो होगा ना। ये कैसे तय करेंगे? ऊपर वाले मीन तय करेंगे। जिसका मीन ज्यादा है उसके लिए वी विल कंक्लूड इन द कंक्लूजन वी विल राइट दैट बिफोर का ऑब्वियसली ब्लड शुगर लेवल ज्यादा था। तो अब इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि सपोज इंसुलिन दिया गया होगा उनको 1 महीने के, या इंसुलिन छोड़ दीजिए, सिर्फ एक डाइट और एक्सरसाइज और मेडिटेशन ऐसा करके कुछ 1 महीने के होलिस्टिक हीलिंग टाइप का प्रोग्राम प्लान किया गया होगा। और उसके बाद देखा गया होगा दैट वेदर द प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग ब्लड शुगर और नॉट। सो यस, इट इज डेफिनेटली कमिंग आउट टू बी इफेक्टिव। सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी आ रहा है बिफोर एंड आफ्टर में, और सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड भी है ब्लड शुगर लेवल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? I have been told by the organizers of this FDP that I will have to continue this lecture till 1 or maybe quarter to 1, क्योंकि नॉन पैरामेट्रिक पोर्शन भी कवर करना है। अगर आपको भूख लग रही हो या आप बोर हो रहे हो या आपका बिल्कुल भी मूड नहीं हो तो हम यहाँ पर स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका मन है नॉन पैरामेट्रिक पढ़ने का तो हम आराम से नॉन पैरामेट्रिक पढ़ा सकते हैं। सो इट्स प्योरली ऑन यू एंड हाउ वेल यू आर टेकिंग दिस। समझ आ रहा है या बोर हो रहे हैं? So this is the paired t-test. आगे बढ़े next. I request you all to please be silent. We have a very good question. I think we can listen to that question. Will be beneficial for all of you. Please go ahead. Ma'am, I think, ma'am, when beforehand the sigma is coming as 0.945, right? So we are saying that null hypothesis is highly acceptable. Yes, and there is no correlation. So why are we then in the next table we are? We should not. We ideally should not. But since here I wanted to tell you all about this, like how to interpret paired t-test. We will not go. We should not go, because this shows that your data isn't a paired data, is not a dependent data. और actually ये है भी नहीं। ये जो blood, I mean, very honestly I am telling you, ये जो blood sugar level 2 है, this is from some other study. ये इन्हीं patient का blood sugar 2 नहीं है। So truly also, this is not a paired data. Same लोगों का blood sugar 2 नहीं है। So when ma'am null hypothesis will be rejected in the previous table, then only we refer the. Yes. Only if it is correlated. So here in the second table, the p-value should be less than 0.05. अगर less than 0.05 है, I will have to do it till 1. It's just paired t-test I am having. So since it is less than मतलब 0.0, it should be less than 0.05. Only then we will go into the next one. Is this clear to everybody? Yes? Yes or no? Coming to the next, that is ANOVA. ANOVA is not taught to you in the theory class, right? So ANOVA, but it is important to also know how to do one-way ANOVA. तो थोड़ा उसके बारे में brief theory बताते हुए, and then we will go into how to do it in SPSS. What do you all know about analysis of variance? कुछ पता है? Two or more groups के mean. Very good, wonderful. When we have two groups and when we have to compare their means, we apply independent t-test.
I'm repeating, when we have two groups and we have to compare their means, we apply independent t-test. When we have more than two groups and we have to compare their means, we apply analysis of variance. This is called ANOVA. Any reason you think that why is it called ANOVA? But here we are comparing the means. When we have to compare the means for more than two groups, then we go for analysis of variance. इसी डेटा में can anybody give me an example जिसमें हम ANOVA लगा सकते हैं? अच्छा पहले ये बताएं, इसी डेटा में तीन ग्रुप, बस तीन ग्रुप्स होने चाहिए, तीन या तीन से अधिक. क्या इस डेटा में कोई ऐसा वेरिएबल है जिसके तीन ग्रुप हैं? नो. मेरा क्वेश्चन सुनिए पहले एक बार. क्या इस डेटा में, हाँ, वेरी गुड. एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी के कितने ग्रुप्स हैं? 0, 1, 2. ये डेटा लाए होंगे तो किसी वजह से ही लाए होंगे हम. हाँ, सोच के तो आए होंगे कि नोवा पढ़ाना है. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि होना है, लाए होंगे. So exercise frequency, suppose I have to, what will be my null hypothesis? Suppose I have to check that whether the average cholesterol level is the same for all the three groups of exercise frequency. मतलब exercise frequency के कौन कौन से तीन groups हैं? Regular, sometimes and never. So suppose those who regularly exercise, those who sometimes exercise, and those who never exercise. एक 30 सेकंड का पॉज हो सकता है, हम जनरेटर स्विच कर हैं. So suppose if we have to see that whether the, आपको सुन ही सकते हैं, आपका थोड़ी स्विच हो रहा है जनरेटर पर, ऑनलाइन का स्विच हो रहा है ना. So suppose if we have to check that whether the average cholesterol level is the same for those who never exercise, those who sometimes exercise, those who regularly exercise. एक क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, हमारे भी जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ग्रेजुएशन में, ये कॉन्सेप्ट दे डू कम अप विद दिस क्वेश्चन एंड दे आस्क दैट he is a student of graduation or is, they have also asked this kind of questions that since we are comparing mean here, why is it called analysis of variance? ये कहाँ से आया शब्द? आ सकता है ना दिमाग में कि अभी तक तो we are only talking about and we are talking about mean, we are comparing mean. Why is it called analysis of variance then? So the concept why, I'm not going into a lot of theory here क्योंकि फिर वो पूरा समझाना होगा, but broadly I'll explain this concept to you. What happens is, try to understand what I'm saying, everybody. This is important. What happens here is that हमें ये देखना है, मैं इसी एग्जांपल से समझा रही हूँ, हमें ये देखना है that whether the average cholesterol level is the same for all those who exercise regularly या sometimes या फिर never. मतलब क्या एक्सरसाइज के आधार पर the cholesterol level is the same or not, ये देखना है हमको. ठीक, अगर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ? There is no variation according to the exercise. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर if the average cholesterol level is the same, it means what? There is no variation in the cholesterol according to level of exercise, right? यही तो मतलब हुआ. However, if the means are different, इसका मतलब हुआ there is some variation due to exercise level. So basically what this ANOVA does is,
It tries to understand the cause of variation. जो इसके पीछे की थ्योरी है वो ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती है कि क्या वो वेरिएशन उस फैक्टर की वजह से है जो फैक्टर आप स्टडी कर रहे हैं, विच इज एक्सरसाइज ऑफ कोर्स इन दिस केस, या फिर वो वेरिएशन रैंडम। रैंडम का मतलब हुआ हम इस वेरिएशन को स्टडी नहीं कर रहे। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल में अंतर तो होगा। अगर सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल एक है तो वो तो फिर डेटा का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। हम लोग यहाँ पर बैठे, अभी अगर हम सबका कोलेस्ट्रॉल लेवल लिया जाए, देयर वुड बी अ वेरिएशन इन दैट कोलेस्ट्रॉल लेवल। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट whether that variation is actually due to the exercise level or that variation is just random. रैंडम का मतलब है अनएक्सप्लेन। रैंडम का मतलब है हमें नहीं पता उसका कॉज, हम नहीं स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो होगा कॉज। तो जब जब जो अनएक्सप्लेन्ड चीज होती है उसको हम किस में डाल देते हैं? रैंडम में। समझ रहे हैं? बट देयर इज अ वेरिएशन एक्चुअली। स्टेटिस्टिक्स के कंसेप्ट में ही वेरिएशन है। अगर वेरिएशन नहीं होगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडीइंग स्टेटिस्टिक्स ऑल टुगेदर, right? So what ANOVA does is it tries to find out what exactly is the cause of variation. अगर वेरिएशन उस फैक्टर की वजह से है, वेरिएशन किस चीज में? वेरिएशन कोलेस्ट्रॉल के एवरेज लेवल में। तो चेक का मीन कोलेस्ट्रॉल ही हो रहा है, लेकिन उसके वेरिएशन के कॉज को फाइंड आउट किया जा रहा है। अगर वो एक्सरसाइज है तब तो ठीक है कि अलग अलग एक्सरसाइज के लेवल के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अलग एक्सरसाइज के मोड के हिसाब से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बदल रहा है, विच मीन एक्सरसाइज इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वेरिएशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर नहीं है तो इसका मतलब कोई रैंडम या अनएक्सप्लेन्ड पार्ट होगा जिसको हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। सो सिंस इट वर्क्स ऑन वेरिएशन, सिंस इट पार्टीशन वेरिएशन, तभी इसको वेरिएंस पार्टीशनिंग भी कहा जाता है। अनोवा के कंसेप्ट को वेरिएंस पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग मतलब समझते हैं ना, तोड़ना, ब्रेक करना। तो सॉरी, या तो वेरिएशन उस फैक्टर की वजह से होगा जो आप स्टडी कर रहे हैं, या वेरिएशन रैंडम होगा। एक फैक्टर स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड वन वे अनोवा। दो फैक्टर स्टडी करते हैं, इट इज कॉल्ड टू वे। यही अगर एक्सरसाइज के साथ हम यहाँ पे एक और कोई चीज, क्रॉनिक डिजीज डाल दें, क्रॉनिक डिजीज के भी दो से अधिक ग्रुप होंगे। अनोवा की कंडीशन ये है दैट जो भी ग्रुप होंगे या जो भी कैटेगरीज होंगे वो दो से अधिक ही होंगे। तो दो फैक्टर एट अ टाइम वेरिएशन के लिए हम ढूंढ रहे हैं अगर, तो इट विल बी कॉल्ड टू वे अनोवा। वन फैक्टर, वन वे अनोवा। इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So we compare mean, but we call it as analysis of variance. Shall I go ahead and do it? So यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं अब? That whether the average cholesterol level is the same for those who exercise regularly, those who exercise sometimes, and those who exercise never. इसके लिए भी आपको ये चेक करना होगा पहले कि मतलब ये शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल द थ्री ग्रुप्स। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल स्मोकिंग के तीनों ग्रुप्स के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चेक कैसे करना है ये तो पता है, अब मैं करके नहीं दिखा रही हूँ अभी, लेकिन एक्सप्लोर पे जाके, डिपेंडेंट पे जाके फैक्टर देखिए, सबके पास ये डेटा है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज गो होम एंड प्रैक्टिस। The only way to learn any software is to continue working on that software. आप एक दिन लेक्चर अटेंड करेंगे, एक हफ्ता लेक्चर अटेंड करेंगे, लेकिन द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग ऑन एनी सॉफ्टवेयर, nobody on earth can teach you or help you in understanding the software. The only way to learn a software is to continue working. गलत करें सही करें कुछ भी करें, प्लीज कंटिन्यू वर्किंग। ये डिपार्टमेंट यही रहेगा, यहाँ के टीचर्स भी यही रहेंगे और यहाँ के स्टूडेंट्स भी यही रहेंगे। एनी टाइम दोज ऑफ यू स्पेशली हु आर इन लखनऊ और in Lucknow University can anytime come here, visit our department. Students
प्लीज डोंट स्टॉप वर्किंग, आप छोड़ देंगे डोंट फॉरगेट, ठीक। तो एक्सप्लोर पे जाके, फैक्टर पे जाके हम नॉर्मेलिटी चेक कर लेंगे। हम ये मान करके चल रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सरसाइज के तीनों ग्रुप्स के लिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक। अनोवा लगाने के लिए एनालाइज, कंपेयर मीन एंड गो टू वन वे अनोवा। एनालाइज, कंपेयर मीन एंड वन वे अनोवा। डिपेंडेंट लिस्ट में क्या डालेंगे? कोलेस्ट्रॉल लेवल। फैक्टर में क्या डालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज। ये थोड़ा सा टी टेस्ट के जैसा दिख रहा है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के जैसा, लेकिन अलग इसलिए है, यहाँ पर आपको वो 0 1 2 डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जितनी कैटेगरीज है सबके लिए ही वो निकाल देगा यहाँ पे। एस्टिमेट इफेक्ट साइज पे टिक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको छोड़ सकते हैं आप। कम टू दिस पोस्ट हॉक। अभी ये क्यों कर रहे हैं इस पर हम आएंगे, थोड़ा सा सही वक्त आने पर आएंगे। तो चीजें सही वक्त पे अच्छी लगती है ना, चीजें सही वक्त पर ही होती हैं। इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड में एलएसडी पे टिक कर दीजिए, और इक्वल वेरिएंस अनअज्यूम्ड पे समहाने पे टिक कर दीजिए। व्हाई आई एम डूइंग इट सही वक्त आने में पता चल जाएगा आपको। पोस्ट हॉक, इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड में एलएसडी, इक्वल वेरिएंस अनअज्यूम्ड में समहाने में। कर दिया? कंटिन्यू। ओके, नाउ गो टू ऑप्शन। डिस्क्रिप्टिव, homogeneity of variance, means plot. Now these two things are very interesting. Brown Porchet test and Welch test. अभी आएंगे उस पर भी बाद में। तो तीन चीजों पर हमने यहाँ पे टिक किया, डिस्क्रिप्टिव, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस एंड मीन्स प्लॉट। हो गया एवरीबडी एट द बैक? कंटिन्यू एंड ओके। तो बहुत सारे आउटपुट आ गए, खूब सारी टेबलें हैं भाई साहब। कमिंग टू द फर्स्ट टेबल। फर्स्ट टेबल में तो कुछ ऐसा है नहीं जो समझ में नहीं आ रहा होगा। मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम। कूल एवरीबडी विद द फर्स्ट टेबल? यस और नो? सेकेंड टेबल, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। मीन से भी हो सकता है, मीडियन से भी हो सकता है, ट्रिम्ड मीन से भी हो सकता है। हम पहले वाले को देखेंगे, फर्स्ट रो, बेस्ड ऑन मीन। ये अभी कहीं पढ़ा था ना हमने, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस? कहाँ? आधे घंटे हुए होंगे शायद। ऐसा? तो बचपन का एबीसीडी कैसे याद है फिर आपको, अगर आधे घंटे पहले का नहीं याद है? Independent leaders. So one thing very important here, ANOVA is a generalization of independent leaders. Independent leaders दो ग्रुप में लगता है, ANOVA more than two groups. जैसे जैसे इंडिपेंडेंट लीडर्स में करते हैं बस उसी तरीके से अनोवा में करेंगे। अंतर इतना है, वहां टी टेस्ट लगता है, यहाँ एफ टेस्ट लगता है, दैट इज ऑल। क्यों एफ लगता है? क्योंकि ये वेरिएंसेस पर काम करता है, तो जो इसकी स्टेटिस्टिक बनती है वो दो वेरिएंस के रेशियो से निकाली जाती है। जब हम दो वेरिएंस का रेशियो निकालते हैं तो वो बन जाता है एफ टेस्ट या एफ स्टेटिस्टिक। इस वजह से इसको बस इतना अंतर है, इट इज अ जनरलाइजेशन ऑफ वेरिएंस। तो वहां होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस था, यहाँ होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस था। नल हाइपोथेसिस वुड बी द सेम इन बोथ द केसेस। क्या? वेरिएंसेस आर इक्वल। क्या हो रही है नल हाइपोथेसिस यहाँ? मीन वाली एसआईजी देखिए, यानी ये पहली वाली रो,
This one. What is the SIG here? 0.112. है? 0.112 is greater than 0.05. Accept and you conclude that variances are equal. Okay? Now keep this in your mind that variance equal IR. इस वाली टेबल का ये पर्पस है. Come to the next table, that is ANOVA. जैसा मैंने बताया, ये एक ANOVA टेबल कहलाती है और ये वेरिएंसेस, मतलब ये जो सम ऑफ स्क्वायर आ रहे हैं आपके, दिस इज, ये दो वेरिएंस ही है बिटवीन ग्रुप, मतलब बिटवीन द ग्रुप्स जो आप स्टडी कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज की फ्रीक्वेंसी, विदिन या अनएक्सप्लेन्ड रैंडम या एरर वेरिएशन. ये हो गया उनका एफ रेशियो, जो मतलब एफ स्टेटिस्टिक जो निकली, दोनों वेरिएंस का रेशियो. मीन सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकला? सम ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. यहां पे निकली उसकी एसआईजी वैल्यू. अनोवा की नल हाइपोथेसिस होती है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन. तो इस केस में क्या नल हाइपोथेसिस होगी? Average cholesterol level for those who exercise sometimes is equal to those who exercise never is equal to those who exercise regularly. mu1 equal to mu2 equal to mu. T-test की null hypothesis होती है ना, mu1 equal to mu2, उसका generalization mu1 equal to mu2 equal to mu3. क्या हो रही है H नॉट यहाँ? रिजेक्ट. कौन बोला रिजेक्ट? हाँ, तो 100 बार तो हो चुका होगा कम से कम. So we accept H naught here and we conclude that there is no significant difference in the average cholesterol level due to exercise. Significant अंतर नहीं आ रहा. अंतर होगा मीन में, ऊपर देख लो आप तो दिख रहा होगा शायद अंतर, थोड़ा अंतर है, but it is not statistically significant. On the basis of this sample, we can conclude that एक्सरसाइज अगर मोड्स डिफरेंट है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल पे स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट अंतर नहीं आ रहा. द डिफरेंस इज नॉट स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. अब इसमें नीचे वाला टेबल तो रह ही गया, पोस्ट हॉक जिसके बारे में हमने किया था, अब उसका सही समय भी आ गया है. Why this post hoc test is important is because suppose if your null hypothesis in ANOVA gets rejected. रिजेक्टेड मतलब समझ रहे हैं? इसकी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है, लुक, हाइपोथेसिस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ये तो सबको पता है. अगर नल होगा तो उसकी ऑल्टरनेट होगी. नल इज दैट देयर इज नो डिफरेंस, mu1 इक्वल टू mu2 इक्वल टू mu3. ऑल्टरनेट इज एटलीस्ट वन ग्रुप इज डिफरेंट. अब एटलीस्ट वन का मतलब हुआ तो एक से ज्यादा भी अंतर हो सकते हैं. पर पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन का मतलब होता है हम ग्रुप बनाते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन से ग्रुप आपस में सेम है और कौन से अंतर. यहाँ पे 3 है ग्रुप, अगर हम दो दो के पेयर बनाएंगे तो कितने बनेंगे? 6, राइट? सो पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन basically applies repeated t-test for all those pairs to check whether there is a difference, significant difference or not. तो अब इस वाली टेबल पे अगर आप देखो तो नेवर को समटाइम्स के साथ, नेवर को रेगुलरली के साथ, समटाइम्स को नेवर के साथ, समटाइम्स को रेगुलरली के साथ, इस तरीके से इट इज कंपेयरिंग एंड चेकिंग. पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन हम तभी लगाते हैं जब अनोवा में हमारी एच नॉट रिजेक्ट होती. आई एम रिपीटिंग, ओनली इफ दिस SIG जो ऊपर आ रही है इज लेस देन 0.05, ओनली देन वी विल अप्लाई पोस्ट हॉक मल्टीपल कंपैरिजन. यहां पर तो एक्सेप्ट हो रही है
इसलिए अगर आप यहाँ पर ये वाली p वैल्यू देखो, p वाली, all of them are coming greater than 0.05. लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो रही होती तो एटलीस्ट एक पेयर तो लेस देन 0.05 आता। आपके पास ऐसे और डेटा सेट्स होंगे, नहीं है तो नेट पर बहुत सारे डेटा अवेलेबल है। अपने खुद के डेटा पर अगर आप काम कर रहे हैं तो डेटा कलेक्ट करिए, 50-60 जितनी ऑब्जर्वेशन है अप्लाई करिए और देखिए इस चीज को। अगर ऊपर, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, पर एच नॉट रिजेक्ट है तो एटलीस्ट एक पेयर तो ऐसा होगा नीचे जिसमें एच नॉट, मतलब जिसमें आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही होगी। अब इसमें कौन सा देखना है, तो आपको याद होगा हमने तम्हाने और एलएसडी दोनों पे टिक किया था। अगर इक्वल वेरिएंस अज्यूम ऊपर आ रहा है देन वी गो फॉर एलएसडी। अगर इक्वल वेरिएंस अज्यूम नहीं आ रहा है, मतलब इक्वल वेरिएंस नहीं है, देन वी गो फॉर तम्हाने। तो हमारे में क्या आ रहा था, इक्वल वेरिएंस आ रहा था, एक्सेप्ट हो रहा था, विच मीन्स वी विल टेक एलएसडी, पहला वाला सेक्शन। इसीलिए जब हम टेस्ट अप्लाई करते हैं तो हम दोनों पे टिक करते हैं, एलएसडी पर भी और तम्हाने पर भी, क्योंकि तब हमें नहीं पता होता कि हमारे वेरिएंस इक्वल होंगे या नहीं। अब उसमें एलएसडी के साथ साथ और भी बहुत सारे दिख रहे थे आपको, बहुत अंतर नहीं है, सभी मल्टीपल कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, लेकिन थोड़े से उनके मेथड्स में अंतर होता है, फॉर्मूले में अंतर होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है सब में। बट आप एलएसडी या इस तरीके के कोई भी ले लेंगे, मोर और लेस इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। Is this part clear to all of you? Post hoc multiple comparison. So only when your H naught gets rejected, we come to this post hoc. अब एक चीज अनोवा में और रह रही है, before I very quickly in maybe 10 minutes tell you what is non-parametric test. Analyze, compare means, one way ANOVA. हमने यहाँ पर वेल्च और ब्राउन एंड फॉर्शेट के बारे में बात किया था। सपोज इफ योर वेरिएंसेस आर नॉट इक्वल, अनोवा से बेहतर होता है कि हम वेल्च लगाएं। अगर वेरिएंस अनइक्वल है, टी टेस्ट में आपको याद है 2 रो बन के आ रही थी, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। सो वेल्च टेस्ट इज द मोर रोबस्ट वे टू चेक फॉर द डिफरेंस ऑफ मीन्स अगर हमारे वेरिएंसेस होमोजीनियस नहीं हो। ब्राउन फॉरशेट भी लगाया जा सकता है, बट ब्राउन फॉरशेट तब लगता है जब डेटा थोड़ा स्क्यूड होता है। स्क्यूड माने समझते हैं ना? यस, इट हैज अ लॉन्गर टेल आइदर टू द राइट और लेफ्ट। तो ब्राउन फॉरशेट तब लगता है, तो ब्राउन और वेल्च, तो ये इस चीज पर आप पिक कब करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी पता नहीं कि वेरिएंस इक्वल है या अनइक्वल है। तो जब आप रन कर रहे हैं उस टाइम पर भी आप इस पे टिक कर सकते हैं। अगर वेरिएंस इक्वल नहीं आ रहे हैं, instead of seeing ANOVA, it is good if you see bench. तो कुछ रिसर्च पेपर्स में अभी एक पब्लिश हुआ है बॉटनी में, आई मतलब आई वाज वन ऑफ द को ऑथर्स इन दैट। इसमें हमने काम ही यही किया है, हमने अनोवा ना लगा के वी हैव रिटन वेल्च अनोवा। सो नाउ पीपल आर, आई मीन दे आर, पहले भी थे, अब और ज्यादा अवेयर हो रहे हैं अबाउट assumptions एंड ऑल। तो रिसर्च पेपर्स में आप लोग देखोगे प्रॉपरली लिखा रहता है ऊपर वेल्च अनोवा, है वो भी अनोवा ही, बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज व्हेन वी गो फॉर वेल्च अनोवा इट मींस दैट homogeneity of variance वाला assumption is not fulfilled. Is this clear to all of you? Are you people understanding? Yes or no? भूख लगी है? So very quickly I'll tell you how to apply non-parametric test. This was all about parametric. तो हमने parametric में क्या क्या पढ़ा? One sample t test, independent sample t test, paired t test and
वन वे अनोवा। सर ने आपको टी टेस्ट और अनोवा का वो बताया था ना, मतलब पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की टेबल दिखाई थी ना। सो वन सैंपल टी टेस्ट के करस्पॉन्डिंग नॉन पैरामेट्रिक क्या है? नाम बताइए फटाफट। वन सैंपल साइन टेस्ट, अगर नाम याद हो। द जूम मीटिंग हैज एंडेड। ब्रेक के बाद हम इसको नहीं कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि और भी चीजें तो पढ़नी है ना आपको। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं फिर। इफ यू पीपल वांट देन वी कैन एंड हियर। ठीक है, तो मैं एक बार थोड़ा सा आई एम गिविंग यू सम आइडिया अबाउट नॉन पैरामेट्रिक, लेकिन जब आगे के सेशंस में मैं बात कर लूंगी एक बार मुकेश सर से। अगर थोड़ा सा आगे के सेशंस में हमारे पास टाइम रहा तो नॉन पैरामेट्रिक हम दोबारा से फिर एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे। हैप्पी? तो अभी कैन वी हैव अ वेरी क्विक। So very quick understanding of how to apply non-parametric test. Analyze non-parametric, तो वन सैंपल साइन टेस्ट लगेगा ऊपर से, बाकी सब लगेंगे लेगेसी डायलॉग से। सो वी गो टू एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक एंड वन सैंपल। 10 मिनट कम से कम। गो टू फील्ड्स। ठीक है, सबकी रिक्वेस्ट है कि नॉन पैरामेट्रिक फिर से दोबारा और एक बार और हो। तो अभी पर कह रहे हैं कि अभी एक बार क्विकली थोड़ा बता दीजिए तो। आपके पास है कैपेसिटी, बताइए। सो इन द फील्ड सेक्शन, एक्चुअली नॉन पैरामेट्रिक का ये इंटरफेस थोड़ा सा उल्टा है। अब तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट से राइट में डाल रहे थे, राइट। जहां पर अभी इन्होंने सारे वेरिएबल्स को टेस्ट फील्ड में रख रखा है। नाउ वी हैव टू चेक फॉर ओनली वन वेरिएबल। अच्छा, जब हम नॉर्मेलिटी चेक कर रहे थे तो कौन कौन से वेरिएबल्स नॉर्मल नहीं आए थे? हाइट एंड वेट, यस। तो ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल केम आउट टू बी नॉर्मल, बट हाइट और वेट नॉर्मल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे? हाँ, so we will check that whether the average, we'll check that whether the average weight is equal to 60 kgs or 65 kgs। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने आपके बाकी के वेरिएबल्स टेस्ट फील्ड में आ रहे हैं उन सबको आप सबसे पहले तो पुट देम ऑन द लेफ्ट। शिफ्ट की दबाएंगे एंड लोअर एरो। सो यू सेलेक्टेड ऑल द वेरिएबल्स, शिफ्ट एंड डाउन एरो। इन सबको हमने लेफ्ट कर दिया। देन सेलेक्ट वेट और वापस से इसको डाल दीजिए टेस्ट फील्ड में। पूछिए, हो गया? एनी अदर डाउट एनीबडी? सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट से वापस राइट से लेफ्ट डालेंगे और उसके बाद जिस पर चेक करना है उस पे गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाके कस्टमाइज टेस्ट। कोई बता सकता है कौन सा लगेगा यहाँ पे वन सैंपल के लिए? कंपेयर मीडियन टू अ हाइपोथेसाइज मीडियन, सर डिस्कस कर रहे थे इस बारे में पहले भी कि अगर हमको वन सैंपल, अगर हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाने हैं तो हम यहाँ पर मीन के बारे में बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट मीडियन। क्यों? बिकॉज जनरली जब हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं
नंबर वन, वी डोंट नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशनल फॉर्म, तो वो अक्सर नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. मीन इज नॉट एन अप्रोप्रिएट मेजर इन द केस ऑफ नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीडियन इज मोर रोबस्ट, पहली चीज. दूसरा रीजन वाई वी गो फॉर मीडियन, क्योंकि कई बार ये ऑर्डिनल या रैंकिंग डेटा पर भी लगता है. सो इन ऑल दोज सिनेरियोज मीन से ज्यादा अप्रोप्रिएट मेजर मीडियन होता है. दैट इज वाई यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस है that whether your median is equal to a hypothesized median. Hypothesized median आप लेंगे कुछ, whatever you take. Let us take that to be 65 kgs. कोई कुछ भी वेट ऐसा ले सकते हैं, जैसे हम हाइपोथेटिकल वैल्यू हमने कोलेस्ट्रॉल में 300 लिया था. रन करिए इसको यहाँ पर. तो 27 वर्जन ऑफ एसके. आपके में ये सब ग्राफ वगैरह बन के नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि नॉर्मली वर्जनों में नहीं आते, तो आप नोट ना लो उसका प्लीज. ये पहली टेबल आप सबके में आ रही होगी. इसमें एक एसआईजी वैल्यू आ रहा होगा, सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रहा है सबके में. आपके में तो रिजल्ट भी आ रहा होगा नीचे. हाँ हाँ, देखो यही होता है जब आप इतना देर तक पढ़ते हो, तो सॉफ्टवेयर सोचता है रिजल्ट भी दे दो साथ में. So what is your p value? Less than 0.05 or greater than 0.05? We do not reject the null hypothesis and we conclude that yes, the median weight is equal to the hypothetical median weight, whatever you've taken, 65 feet. Is this clear? One sample. आगे बढ़े. सर और मैडम लगातार देख रहे हैं, तो मुझे अब इसको इमीडिएटली स्टॉप करना होगा. इसमें आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड तरीके से समझने की कोशिश करें. कमिंग टू द नेक्स्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. बहुत सारा कंटेंट है. हाँ, तो पहला हो गया वन सैंपल टी टेस्ट के करस्पॉन्डिंग वन सैंपल नॉन पैरामेट्रिक प्रिकॉक्शन साइन ड्राइंग. नेक्स्ट सर ने कौन सा बताया था? इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट. इंडिपेंडेंट टी टेस्ट के करस्पॉन्डिंग नॉन पैरामेट्रिक कौन सा हुआ? मान विटनी यू टेस्ट. हम्म, मैन विटनी यू टेस्ट. ठीक, कैसे लगाएंगे यहाँ पे? एनालाइज नॉन. अब थोड़ा सा हम यहाँ से करेंगे, बिकॉज ऊपर का इंटरफेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. वन सैंपल में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. दैट इज वाई वी गो देयर. अदरवाइज लेगेसी डायलॉग से थोड़ा सिंपल हो जाता है. अब एनालाइज नॉन पैरामेट्रिक लेगेसी डायलॉग्स, और कहाँ जाएंगे बताइए? अगर हमको टू सैंपल्स के लिए, इंडिपेंडेंट सैंपल के लिए नॉन पैरामेट्रिक लगाना है, यू डोंट इवन नीड टू रिमेम्बर द नेम ऑफ द टेस्ट. आप टू इंडिपेंडेंट सैंपल पे जाएंगे एंड यू विल क्लिक ऑन दिस. किसके जैसा इंटरफेस दिख रहा है इसका? डायलॉग बॉक्स किसके जैसा दिख रहा है? क्विकली. इट इज लुकिंग वेरी मच लाइक टी टेस्ट. अब अंतर क्या हुआ? वो पैरामेट्रिक है तो वहां आप होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस भी चेक कर रहे थे, नॉर्मैलिटी तो चेक कर ही रहे थे. सिंस इट इज नॉन पैरामेट्रिक, यहाँ इस तरीके का कोई भी असम्पशन हमको चेक नहीं करना. वेट हमें पता है नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसी डेटा पर अब हमको ये देखना है कि स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग बिहेवियर से क्या वेट पे डिफरेंस आ रहा है या नहीं. Whether the both have same distribution, whether the median for the two groups is the same or not, कैसे भी करके we can check this. What we will put in the test variable? Quick. What we will put in the grouping variable? Frequency of exercise. Again यहाँ पर भी हमको define groups करने होंगे जैसे वहां किए थे. So what we'll do in group 1? 0. What we will do in group 2? 1. क्योंकि एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी का कोड क्या था? 0 and 1. अब आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी में 0 1 भी तो है. स्मोकिंग भी ले सकते हैं, एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, जेंडर भी ले सकते हैं. एनी वेरिएबल वेयर यू हैव टू ग्रुप्स. यू कैन टेक स्मोकिंग बिहेवियर इफ यू वांट टू. यहाँ टेस्ट में बाय डिफॉल्ट मान विटनी यू टेस्ट पे सिलेक्टेड है. अच्छा ठीक है, मैंने हटा दिया एक्सरसाइज फ्रीक्वेंसी. स्मोकिंग ले लिया.
वेरी गुड। हैप्पी? अब ठीक है, अब कर सकते हैं रन। मान विटनी यू टेस्ट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द नल हाइपोथेसिस, वी सी द एसआईजी वैल्यू, व्हाट इज इट? आ रहा है सबके में? क्या आ रहा है? 0.4। इट इज। व्हाट विल यू डू विद द नल हाइपोथेसिस? विल से दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन, अब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इन द मीन रैंक्स फॉर स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स विद रिस्पेक्ट टू देयर वेट, या दे बोथ कम फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एच नॉट बनाया जा सकता है। द मीडियन इज द सेम। So we'll say that we accept or we do not reject the null hypothesis and we conclude that there is no significance. इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट कौन सा है? पेयर्ड। पेयर्ड के लिए हम यहाँ पर अगर जाना होगा तो कहाँ जाएंगे? We go to two related samples. पेयर्ड के करस्पॉन्डिंग नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का नाम Wilcoxon signed rank test. That is Wilcoxon rank sum. Mann Whitney is also called Wilcoxon rank sum. This is Wilcoxon signed rank. Analyze non-parametric legacy dialogues and you go to two related samples. अब यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल को हमने नॉर्मलिटी चेक किया था, तो इट केम आउट टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, बट अभी इस डेटा पे हमारे पास ऐसे नॉन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पेयर्ड वेरिएबल नहीं है, तो हम इसी पे रन करके एक बार वी आर शोइंग दिस टू यू सो दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू डू इट. इट इज लुकिंग वेरी सिमिलर टू द पेयर्ड की टेस्ट, राइट? बस पहले वाले में हम क्या डाल देंगे? ब्लड शुगर लेवल. यहाँ पर बोलिए ब्लड शुगर 2. विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, पहला वाला सिलेक्टेड है, आपने ओके किया. एसआईजी वैल्यू रिजेक्ट और एक्सेप्ट? रिजेक्ट, which means एक्सेप्ट थोड़ी होगा, लेस देन 0.05 है, तो we reject the null hypothesis and we conclude that there is a, अब अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो हमें आइडियली ये भी तो डिसाइड करना चाहिए कि किसका ज्यादा है और किसका कम है. सर इस बारे में डिस्कस कर रहे थे ब्रीफ में इन द प्रीवियस लेक्चर ऑल्सो, कि मीन रैंक्स के ऊपर कैसे डिसाइड करेंगे कि अब किसका मतलब ब्लड शुगर बिफोर में ज्यादा है या आफ्टर में ज्यादा है. हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड दैट? आपने इन दोनों के मीन रैंक्स देखे, नेगेटिव रैंक एंड पॉजिटिव रैंक, कौन सा ज्यादा है, किसका मीन रैंक ज्यादा है? नेगेटिव रैंक का मीन रैंक ज्यादा आ रहा है. यहाँ पे ए लिखा है छोटा सा सबस्क्रिप्ट सबके में. Go to this and see क्या दिख रहा है यहाँ पे. ब्लड शुगर 2 is less than blood sugar 1 या the first level of, which means that हम इसमें अब क्या conclude करेंगे? There is a significant difference in the blood sugar levels and the blood sugar has significantly gone down. इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं that the mean ranks for blood sugar 2 is significantly lower as compared to the mean rank for blood sugar. इस डेटा पर हमने पैरामेट्रिक भी लगाया था, वहां पर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहा था. दिस इज हाउ वी डिसाइड. लेकिन इस चीज को हम तभी देखते हैं जब यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो, इफ एक्सेप्ट हो रही है, या इफ वी राइट दैट वी डू नॉट रिजेक्ट इट, तो हम सीधे लिख देते हैं देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. The last one, the last non-parametric is corresponding to one with ANOVA, जिसको हम बोलते हैं क्रस्टल वॉलिस टेस्ट. जहां पर अगर हमको लगाना होगा तो कहां से लगाएंगे? के इंडिपेंडेंट सैंपल्स, क्योंकि एज आई सेड अनोवा कब लगता है? व्हेन यू हैव मोर देन 2 इंडिपेंडेंट ग्रुप. जनरलाइजेशन ऑफ टी टेस्ट
सिमिलरली यहाँ पर भी तभी लगेगा जब आपके पास ऐसे 2 से अधिक ग्रुप्स हैं, उनका मीडियन कंपेयर करना है। उस केस which is an equivalent of 1 ANOVA, that is called Kruskal-Wallis. Analyze non-parametric legacy dialogues, K-independent sample. Suppose हमको weight लेना है, तो that could be our test क्योंकि weight is non-normally distributed. Grouping variable में क्या डाल सकते हैं यहाँ पे? Variable that has more, कौन सा variable है? Exercise frequency. तो weight को डाल देंगे हम test variable में, ग्रुपिंग वेरिएबल में डाल देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पर थोड़ा इंटरफेस वहां से बदलता है, यहाँ पर वी विल हैव टू डिफाइन द रेंज। तो हमारी रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 to 2, क्योंकि 3 है, समटाइम्स, नेवर एंड रेगुलरली हु एक्सरसाइज। बाय डिफॉल्ट इट इज सेलेक्टेड Kruskal-Wallis H test. What is the null, what is the SIG value here? क्या करेंगे? We do not reject the null hypothesis and we conclude that the median weight is the same for all the 3 groups. After the mean ranks is the same for all the 3 groups. Is this clear to all of you? That's all from my side.